Hello students, welcome to my class. So we were discussing about the graphical representation of motion and we were drawing the velocity time graph. So the last class we have discussed about the uniform motions velocity time graph. And what did we find out? We find out that the uniform motions velocity time graph is a straight line which is parallel to the time axis. वो एक ऐसा ग्राफ है जो टाइम एक्सिस का पैरेलल होता है. तो व्हाट डिड वी डू देयर? So the graph looked like this. So we got a straight line which is parallel to time axis. So वो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है. तो हमने और क्या ढूंढा वहां पर? हमने वहां पर ढूंढा डिस्टेंस. सो इस ग्राफ को देखकर हमें डिस्टेंस कैसे पता चला था? हमने कोई दो पॉइंट इस ग्राफ में ले लिया और उन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसका एक रेक्टेंगल हमें मिला और उस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वही होता है हमारा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कुछ इसी तरह. So this was what we discussed in the last class. So today we are going to discuss about the velocity time graph for non-uniform motion. हम non-uniform motion के लिए एक velocity time graph निकालेंगे. So देखते हैं हमने कैसे सीखा था कल. So यहीं पर देख लेते हैं. तो ये non-uniform motion है. Non-uniform motion से हमें uniformly accelerated और non-uniformly accelerated मिलता था. सो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का पहले पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन देखेंगे और इसका ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा. इसके लिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म मोशन का डाटा है. तो इसको देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो यहाँ पर देखोगे कि टाइम 0 सेकेंड में वेलोसिटी 0 है, 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर हमें क्या नोटिस करने मिला कि एवरी सेकेंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ रहा है. तो इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. एट एवरी सेकेंड द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड. सो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ के लिए हमने टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लिया और हमने उसका जो जो पॉइंट है वो प्लॉट कर दिया. तो हमारा पॉइंट हमने ऐसे प्लॉट किया. तो उसके बाद हमने जो जो पॉइंट दिया है वहाँ पर उसको मार्क किया है, जैसे 0 0 1 2 2 4 3 6 4 8 और उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया. तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिला उस पॉइंट से. तो ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है वो. तो ये है ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन विच इज पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड. Now, how do we find the distance from this graph? So, in the previous graph, we have found the distance. How? By finding the area. So, same here. Pick any 2 points, find the area. So, here if we pick any 2 points, then we have to draw the perpendicular, same like before. And then we have to find the area under that line, that graph. Okay. So here we find that the graph is quite looks like a trapezium. So in this we have to find out the area of the triangle first that we have made and then the area of the rectangle. If we add these two, then we will find the area of this whole shape, trapezium shape, right? So how do we do that now? So similarly, you know that the area of a triangle is half into base into height, and then you know the area of the rectangle is length into breadth. So if you add this, you will get the distance. So आपने ये डायग्राम तो नोटिस कर लिया होगा कि कौन सा पॉइंट है ए बी सी डी ई. नाउ देखते हैं चलो कैसे हम ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट हमने एरिया फाइंड कर लिया, एरिया 1 दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. देन वी हैव फाउंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ. Then if we add, we get the distance. So this is the distance from the graph. S is equal to A1 plus A2, which is equal to half into AD into DE plus AD into DC. So you can see the diagram again and then find that easily. So now velocity time graph for non-uniform motion, uniformly accelerated one for deaccelerated motion.
So the graph of deaccelerated motion is also a straight line, and the graph looks like this. So in this one, the graph comes from up to down in a straight line like the one you have seen in the picture. So now you have to draw a graph for deacceleration, uniformly accelerated, that means uniformly deaccelerated motion for a given data. So first of all, I am only giving you a data. You have to make your own data also after this and make a velocity time graph. So make the velocity time graph for this data, and then I am showing you how to find the distance. So to find the distance, you have to do the same thing that you did before. So you have to mark 2 points, point A and point B on the graph, and then draw perpendicular from point A and perpendicular from point B to the time axis, and then you will find a trapezium like shape. So you have to find the area of the trapezium, and then you will get the distance. Now how to find the area? You can draw a perpendicular from B to the line perpendicular line A to the time axis. Then you will find a rectangle and a triangle. So if you add the triangle's area and the rectangle's area, you will get the area of the whole trapezium. So this is how you do it. So this is simple. You can now calculate any given data and find the distance from a velocity time graph. So simple. So the velocity time graph for deaccelerated motion looks like this, and then now we will proceed to the non-uniformly accelerated motions velocity time graph. तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाए तो उसका कोई एक फिक्स्ड ग्राफ का शेप नहीं होता है, जैसे कि हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में मिला था या फिर यूनिफॉर्म मोशन में मिला था कोई एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा हमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं मिलेगा। इसका ग्राफ कुछ पहाड़ जैसा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है या कुछ इस तरह। So you can see here that this graph is not a straight line graph. ये ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो डाटा दिया हुआ है साइड में, राइट साइड में, उसी से बनाया हुआ ये ग्राफ है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो इस ग्राफ से आपको ये पता चलता है कि आप कौन से वेलोसिटी में कौन कौन से वक्त में जा रहे हो, लेकिन इससे आप डिस्टेंस का अंदाज़ा करेक्टली नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसका कोई 2 पॉइंट का एरिया अगर ढूंढने जाओ तो आपको उस कर्व पोर्शन में जो एक एरिया होगा उसका भी एरिया ढूंढना पड़ेगा, जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हम इसका किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नहीं ढूंढ सकते। सो इतना तक था हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अब हम जानेंगे अबाउट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सोचना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशंस को याद रखना होगा और इसके बेसिस पर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, बस इतना ही काम है यहाँ पर। तो व्हाट आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? So let us see those. These equations are basically some relation between the terms like acceleration, initial velocity, final velocity, time, etc. All these. So let us look at the first equation. So our first equation of motion is v is equal to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time taken. This equation you have already seen in the acceleration time, right? A is equal to v minus u divided by t. So this is also transformed into v is equal to u plus at. So remember this equation. V is equal to u plus at, v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time. So if in the question any 3 of them are given, 3 of the parameters like
for example, that initial velocity is given, acceleration is given, and time is given. Then you have to find the velocity. Then you have to use this equation in order to find the final velocity. Got it? Now let's go to the second equation of motion. The second equation of motion is S equal to ut plus half at square. So you have to remember this equation. This is the second equation. S is equal to ut plus half at square, where S is the distance traveled, u is initial velocity, t is time, a is acceleration. Okay, it is the relation in between these four parameters. So if any three of the parameters are given, then you can find the fourth parameter. Here, for example, you are given distance, initial velocity, acceleration, then you can find the time using this relation. So अब चलते हैं तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ. सो द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन में अगर ये चार पैरामीटर से कोई तीन अगर दिया हुआ हो तो हम चौथा पैरामीटर ढूंढ सकते हैं. जैसे कि इन दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, if acceleration, distance and initial velocity is given, then you can find the final velocity by using this equation. So what are the three equations of motion we have got? The three equations of motion we got are v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as. You have to note down all the three equations and solve the problems based upon these three equations. There will be a lot of questions on this. I will give you a lot of work on this, so you have to do that. लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये तीनों इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए. सो तीनों के तीनों इक्वेशंस आप अभी के अभी याद कर लो. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. क्या पता कौन से प्रॉब्लम में कौन सा इक्वेशन यूज हो. सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म्स. ओके, गॉड ब्लेस यू.